Welcome everyone to my channel Tendering and Project Management. I have started this particular channel to grow and at the same time to help people who want to know more about tendering and project management. बेसिकली मैं दो लैंग्वेजेस ये जितने भी मेरे वीडियोस होंगे उसके लिए मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा इन इंग्लिश एंड इन हिंदी टू, या तो एक मिक्स मान के चलिए आप कि हिंदी एंड इंग्लिश में मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। आज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है अबाउट टेंडरिंग स्पेसिफिकली, और इसके बाद कंटिन्यूअसली वीडियोस आता जाएगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है आई विल बी एबल टू मेक प्रेजेंटेशंस और आई विल बी एबल टू कलेक्ट सोर्सेज और मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। इंटरनेट में मैंने काफ़ी सर्च किया, एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड कंटेंट्स अवेलेबल है, जबकि ये टेंडरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है बहुत लोगों के लिए। तो चलिए अभी ये पर्टिकुलर जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। So what is a tender practically? So this particular term tender is associated with a bid, an invitation to a bid for a project where a contractor, supplier or vendor gets selected for a specific set of work is called a tender. So practically क्या है, whenever there is a budget or fund available by any government or private body. So it can be a government body, it can be a private body, or it can be a government or private entity when they have a specific budget for a specific set of work, a scope of work which covers a specific set of work practically, they call for a tender, और उसमें they are calling contractors, suppliers and vendors to submit their proposals or quotations, and finally they select one of them. It might be through price modeling, or it might be through selection on the basis of price plus technical qualification based. उसके बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर या सप्लायर को सिलेक्ट किया जाता है एंड देन दे गिव द टेंडर award to that specific party. This is called tender. Now let's go ahead. Which sectors call for a tender? तो देख लेते हैं कि कौन कौन सेक्टर में टेंडर आता है इन जनरल। कंस्ट्रक्शन, द मोस्ट पॉपुलर सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंसल्टिंग सेक्टर, professional services, there are lately coming up. The tenders are called for business to business and business to consumer also. ये 6 sectors में mainly specific body या clients they call for a tender on the basis of a specific set of work and budget availability. Now next go to the types of tenders. So there are practically and majorly, as per the practice in the industries, 4 types of tenders are there. Out of that, open tendering process is the most popular. There are other 3 selective processes too. One is the selective tendering, one is called the negotiated tendering, and the last is टू स्टेज टेंडरिंग। चलिए अभी देख लेते हैं इन डिटेल कि ये जो ABCD 4 ऑप्शंस है, ओपन टेंडरिंग, सिलेक्टिव, नेगोशिएटेड एंड टू स्टेज टेंडरिंग, इसमें एग्जैक्टली क्या मीनिंग क्या है। So open or public tender is basically when the utility or client is publicly advertising a call for a tender or RFP or RFQ, and they call the tender and ask any contractor or supplier or vendor to participate. Now क्या होता है इसमें, ओपन और पब्लिक टेंडर डोमेस्टिक भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। कुछ आईसीबी टेंडर्स आते हैं जो इंटरनेशनली फंडेड होते हैं, जैसे आपका मान के चलिए फंडिंग माइट बी थ्रू वर्ल्ड बैंक, एडीबी एंड सो ऑन। तो उसमें इंटरनेशनल पार्टीज भी
टेंडरिंग प्रोसेस में ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर डोमेस्टिक पार्टीज भी आता है। एंड generally these are getting advertised through social media, news, and so on, whereas anybody can come from any source of uh, any country or any part of any country, or if it is one NCP which is national competitive based, then only domestic companies are uh, getting qualified. And next is the selective tender process. So selective tender में क्या होता है, suitable contractors are getting identified and invited for the tendering process. And इसमें स्पेसिफिकली सिलेक्टिव टेंडर प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो प्रिंसिपल है या क्लाइंट है या यूटिलिटी है, उनको पहले से ही पता है कि हाँ, हमें 3 4 या एक कॉन्ट्रैक्टर है या सप्लायर है, वो क्वालिफाई होते हैं। उनको पता रहता है पहले से ही कि दे कैन डू दिस वर्क and they are qualified to, technically they are sound, financially qualified to, maybe, and then they call them for submission of the proposal against a tender. ये हो सकता है एक या दो या पांच या 10 पार्टी को कॉल किया जाए और उनमें से ही फिर सिलेक्शन होता है फाइनल पार्टी, तो ये ओपन नहीं होता है। that is the difference between open and selective tender. Next is negotiated contract. So इसमें क्या होता है, definitely negotiated contracts हमने देखा हुआ है, अगर कोई यूटिलिटी और client thinks that there is only one party who is eligible and they are capable of doing it, they call them for a specific set of work, उसमें negotiation होगा, scope of work एंड बजट रख के टाइम, क्वालिटी एंड कॉस्ट, ये जो पिरामिड है, टाइम, क्वालिटी एंड कॉस्ट, उसको सेंटर में रख के दे विल नेगोशिएट एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर। जनरली ये ऐसे केसेस में होता है जहां पे एक ही कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर का स्पेशलाइजेशन है वो पर्टिकुलर डोमेन में, और जहां पे आप सेकंड किसी को देना पॉसिबल नहीं है, सेकंड कोई ऑप्शन के बारे में सोचना, बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स द कॉन्ट्रैक्टर इज हैविंग। दिस इज कॉल्ड द नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। एंड फाइनली देयर इज वन सिलेक्टिव प्रोसेस कॉल्ड टू स्टेज टेंडरिंग। दिस इज द फोर्थ टेंडरिंग मेथड, so which allows basically the appointment of supplier or contractor before completing the information required to enable them to offer a fixed price. इसमें क्या होता है, generally they first uh, open up for a specific tender, they call for a specific tender, they means I mean to say the client or utility, and then कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, फिर उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग होता है, उसके बाद जो क्वालिफाइड है मोस्ट, लेट्स से 3 और 5 आउट ऑफ 10 एज एग्जांपल, उनसे प्राइस एंड बेस्ट प्रपोजल पूछा जाता है। whoever is going to be the going to perform best, they will get this प्रोजेक्ट। हमने बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है कि एक प्री क्वालिफिकेशन स्टेज होता है जहाँ पे क्लाइंट IFB या तो कॉल फॉर टेंडर्स लाते हैं, और फिर मे बी देयर माइट बी 15-20 parties who are interested to pursue the work, वो आ जाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होता है, that is called the PQ stage, और सिलेक्टिव पार्टीज को फिर सेकेंड स्टेज में प्राइस एंड प्रपोजल, टाइमलाइन एक्सेट्रा सबमिशन करने के लिए कॉल किया जाता है, एंड देन दे select one of the most suitable contractors. So these are the four types of tenders, as I mentioned before: open, selective, negotiated, and two-stage tendering. Now next is the process. कैसे process होता है? Let us discuss that part, and this is the last part for this video. So process is very simple. First क्या होता है, एकदम शुरू में स्पेसिफिकेशंस प्रिपेयर किया जाता है। बहुत सारे केसेस में सर्वे होता है, सर्वे और ड्यू डिलिजेंस होता है, एंड देन दे अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, जिसके बेसिस पे वो काम होगा या फिर वो वर्क एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड देन
the tender document is getting prepared. So the tender document might have 10 different sections. We will see this in another video. It's another subject practically. So उसके बेसिस पे स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिटीज के बेसिस पे टेंडर प्रिपेयर हो जाता है. देन the utility or client is advertising this and selling the tender documents to the interested parties. Then they actually held site visits or pre-bid meetings or closed meetings or negotiations, and they ask selective parties, or maybe it is an open tender. If so, they call for a specific deadline where contractors or vendors will come and submit their proposal. It might be online or offline, by the way, and on a particular specific date they open this submitted tenders. इसमें हो सकता है वन स्टेज या टू स्टेज हो सकता है, जहाँ पे प्राइस भी ओपन हो सकता है, या तो फिर पहले टेक्निकल चेक करने के बाद टू स्टेज में प्राइस ओपन होता है या प्रपोजल ओपन होता है. वो भी एक प्रोसेस है. एनीवेज, आफ्टर ओपनिंग they evaluate the technical, financial, specific requirements. There might be 20 requirements or 15 requirements, depends on a case to case basis. And then once the evaluation, which might take days, weeks, or even months, and even years too, by the way, I have seen tenders which are getting evaluated for 2 years, unfortunately. So वैसा भी होता है. It is, in some cases it's going to be a time taking process. So जब evaluation complete हो जाता है, then they award the contract to a specific contractor or vendor. It might be more than one parties when there are different lots, or it depends on the client. And then contract is getting prepared on the basis of the tender. Signing of the contracts will happen on a particular day. There might be 5 conditions, 10 conditions, some commitments can be taken, some guarantees can be given by the contractor, and then the signing ceremony will be there. And then the execution shall start after signing the कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करना होता है. दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस. एंड that's it. We have come to the end of this video. I hope you liked this video. If you like, please like this video, subscribe the channel, share it with people who are in need to understand, and I will come up with more videos like this. If you have any inquiry, you can contact me over the email given in the beginning, और आप कमेंट्स करके भी नीचे जो YouTube कमेंट्स होता है उधर भी डालिए, या जो भी वीडियो कमेंट्स है, I'll be checking the same and hopefully I'll be able to get back to you with a solution or an answer. Thank you.